Moving on to our next topic, which is angular magnification. और उसको कवर करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एक इमेज की, तो वो हमें जानना होगा। हमारे पास कोई भी अगर इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमने हमारी आंखों पे जो इमेज बनता है, तो वो नॉर्मल के साथ एक ख़ास एंगल बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो ये जो एंगल बनाएगा ये एक ख़ास एंगल बनाएगा जो कि थोड़ा सा कम एंगल होगा। और इस ऑब्जेक्ट को मैं जूं जूं नियर लाता रहूं आंखों के, अ, उतना ही अगर आप गौर करें तो ये एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अब हमारी आँख तो एक ख़ास डिस्टेंस पे देख सकती है जो कि नियर पॉइंट होता है आँख का, उससे ज़्यादा करीब इमेज देख नहीं सकती, ऑब्जेक्ट देख नहीं सकता। इस वजह से ये जो मैक्सिमम एंगल बनेगा मैं उसको थीटा कह देता हूँ। दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेड पेन विच इज़ थीटा। और उसका डिस्टेंस जो होगा वो n होगा। नॉर्मली हमारे पास जो n की वैल्यू होती है, n इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब अगर मैंने इस इमेज को इनलार्ज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना है, तो मैंने एक कनकेव मिरर लगा सकता हूँ यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट को मैंने एक ख़ास जगह पे रखना होगा, दैट इज़ बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर और द लेंस। इन दिस केस इट्स लेंस। सो यहाँ पे अगर मैं इमेज रखूँगा, ऑब्जेक्ट रखूँगा, तो इसका इमेज जो होगा दैट विल बी इन लार्ज, दैट इज़ हाईलाइटेड इन रेड। सो एज अ रिज़ल्ट जो अब जो मुझे इमेज नज़र आएगा इस केस में, वो जो एंगल बना रहा होगा, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय थीटा डैश। और uh, इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है दैट इज़ एच आई। नाउ दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन थीटा because now the image is enlarged. So how we define angular magnification is the angular displacement of object of image divided by that of object. इस केस में मैग्नीफिकेशन विल बी ग्रेटर देन वन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन विल बी ग्रेटर देन वन बिकॉज जो हमारे पास इमेज का एंगल आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर। नाउ हमारे पास अगर हम गौर करें, वी आर गेटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसकी बेस लेंथ जो है n है और हाइट h है, और यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के साथ मैं इन तीनों का रिलेट कर सकता हूँ बाय टेंजेंट, विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर h नॉट डिवाइड बाय n। अब स्मॉलर अगर थीटा हो तो हमारे पास टेन थीटा हमेशा थीटा की इक्वल होता है, but that should be noted that theta should be taken in radians, which is the SI unit. नॉर्मली इवन अगर 25 सेंटीमीटर भी दूर हो हमारे पास से ऑब्जेक्ट, तो वो जो एंगल बनेगा दैट विल बी स्मॉलर, सो वी कैन रिप्लेस 10 बाय थीटा। So we get this equation. अब सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी इस केस में भी हमारे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है, that is highlighted in pink.
सो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, सो दिस इज ट्राइंगल शोन इन पिंक, जिसकी बेस है डी आई विच इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड उसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ एच आई, दैट इज़ द साइज ऑफ इमेज। और इसी ट्राइंगल में भी 10 अगर मैं रेशो लूँ दैट विल बी एच आई विच इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और सिंस एंगल इज स्मॉल even in this case, although it's a bigger angle, but still using this approximation, tan theta is equal to t theta, uh, what we can write here is theta dash is equal to h I divided by h di. I can write it here. अब मैंने ये दोनों फार्मूले जो मैंने एक पिंक में, एक रेड में और एक येलो में हाईलाइट किए, ये मैं अगर इस इक्वेशन में डालूँ तो इस इक्वेशन से मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी दिस वन। और इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करो, यू कैन डू द मैथ्स बाय योरसेल्फ, यू विल एंड अप विद दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मेरे पास तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, एच आई, एच नॉट और डी आई। पीछे इक्वेशन में मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि ये जो तीनों चारों हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, size of image object, they can be related to each other by this formula. Here I am not putting this negative sign because the height is now the image is not inverted, rather it's upright image, so यहाँ पे plus आएगा, and is this formula can be modified to get the results like this. और इसी रिजल्ट्स को फिर हम अगर इस इक्वेशन में डालें, so we will end up with this equation which is the angular displacement is equal to n divided by d. I'll highlight this with yellow because this is an important relation. n यहाँ पे क्या है, this is the this is the shortest distance for a human eye, and normally this is 25 centimeter. Now d naught is the distance of object, and in real life we can't measure this distance. हम कैसे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मेजर करेंगे? सो वी यूज़ लेंस इक्वेशन, and in the lens equation as I have derived this formula that is highlighted in red, इस फार्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूं, so I will end up with this equation, और 1/d0 को अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए, so we will get this equation which is again I am just modifying the equation by writing the dependency on focal length and image distance, and of course the short distance for a human eye. So this is how we derive this equation. Since this is also an important equation, I will highlight this with yellow. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं that should be noted. Number one is
the distance of image. Uh, this image can be made really close to eyes, which can be uh, the minimum distance at which image can be formed, as I have discussed, can be equal to n, which is normally 25 centimeter. So और दूसरा केस ये है कि image is the farthest to eyes. इस केस में image हमारे पास सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेगा और इस केस में मैग्नीफिकेशन भी सबसे ज़्यादा होगी. Or in first case, when the image is formed at n, at distance n, then the image magnification will be smallest. So let's see how the magnification formula becomes. So using this formula that we have derived, I put the distance of image to be 25 centimeter, which is n, और n को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ so n के साथ कैंसिल हो जाता है, so we get 1, which is 1 plus n by f, and now it is dependent upon the focal length just. So again, the magnification that we will get is in this case is just dependent upon the focal length of the lens. Yes, it also depends upon n, but n in this case for every eye it is 25 centimeter for normal eye. Similarly in the other case, अगर distance of image जो है वो infinity पे हो, which means that the image is formed at the maximum distance or maximum magnification होगी. So that will be infinity, the distance will be infinity, negative infinity, because the distance is on the left of the lens, the image is on the left of the lens. So angular displacement is angular magnification इस केस में अगर हम पुट करें 1 by n 1 by infinity, so normally we know from mathematics that 1 by infinity is equal to 0, and this term will be cancelled, so we will only be left with n by f. Now it means that the magnification is only dependent upon the focal length. Well यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल करूँ, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, और दूसरा है उसका फोकल लेंथ है इट्स अ बिट थिन, सो दूसरे लेंस का फोकल लेंथ इट इज़ 15 सेंटीमीटर. सो किसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी? एंड वी नो दैट the one that is less focal length will have greater magnification. इस केस में अगर मैं magnification calculate करूँ, so n is 25 and f is 5, so magnification is 5. It means that the image is enlarged 5 times. However, in the other case, magnification is angular magnification is 25 divided by 15, which is equal to 5 by 3, and it is less than 2 in this case. So first case में 5 है, यानी 5 times angular magnification हुई है, और यहाँ पे 2 times हुई है. So we can see how what is the maximum magnification that a mirror or a lens can achieve based on its focal length. Okay, so this is the maximum, this is the minimum.
One mistake that I did is both have the same sign, so the maximum will be, I will put double dash here. So the double dash is maximum. एनीवेज सो कंक्लूजन हमारे पास यही है कि किसी भी लेंस का अगर हमें फोकल लेंथ पता हो तो उसकी मैग्नीफिकेशन मिनिमम और मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। और मैग्नीफिकेशन उसकी इससे इस टर्म से कम होगी, इस टर्म से ज़्यादा होगी और इससे कम होगी। ओके well this is it. One thing I wanted to highlight is that one term is angular magnification. One is linear magnification, and both of them are completely different terms. Angular is dependent upon thetas, theta and theta dash. So theta of object and theta of image. However, linear magnification is dependent upon not the angle, it's the linear length of the object. So which will be h object, h image. And these two are completely different terms. So that's it from this lecture. And this is all from my side. If you have any question, please put that in the comment.